Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 2, in our last class, we already discussed with types of mouse. Okay, so the first is mouse with different buttons, rollerball mouse, optical mouse, gaming mouse, trackball mouse, and number 6 is touchpad mouse. Okay, and number 7 is touch mouse. Clear? Okay, so there are 7 types of mouse. Okay, today let us understand about parts of a mouse, holding and moving a mouse, mouse pad, working with a mouse, okay, selecting an item, using the right button, dragging and dropping a mouse, okay. So how you select an item with the help of drag, drop, okay, release the mouse button, okay, everything. So let's watch a small video of all these things, okay. So class 2, let us understand about mouse, okay, more functionalities and more working process. Clear? So let's start. So the first thing is basically a mouse is an input device, okay. Clear? So this is the picture of mouse. Now a mouse is an input device. It is also known as the pointing device. What is the meaning of pointing? A mouse is used to select and open programs by pointing the pointer at on the screen. For example, like this, दिख रहा है pointing, this is called pointer. So a mouse is used to draw a pictures, images, your drawing, anything, okay. The mouse is attached to the CPU with the help of wire. Clear? Now this is left button, right button and scroll wheel, okay. And one more part is there, wire, okay. Now the left button is used to select and click the object on the monitor, and now the right button help us to perform some quick task like open the set of option, etc. Okay. Now what is the use of scroll wheel? To scroll our screen. Clear? Scroll wheel का यूज़ क्या होता है? Scroll यानी पेज अप एंड पेज डाउन, यानी हम पेज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल व्हील, ओके. नाउ कुछ और पढ़ते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू होल्ड अ माउस, यानी प्रॉपर होल्डिंग अ माउस. सो बेसिकली पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन, ओके. इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है? लेफ्ट माउस बटन पे, लाइक दिस, ओके. एंड नाउ द मिडल फिंगर इज ऑन राइट बटन, ओके. कहाँ पर रहेगी? मिडिल फिंगर राइट बटन पे एंड आर इंडेक्स फिंगर लेफ्ट बटन पे, जैसे दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे. क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ what is the next thing? So basically the next is, okay, so the first thing is holding a mouse. I hope it is clear. ये आपको समझ में आ गया होगा. Now a computer mouse is used by pressing its button. Pressing button on a mouse is called clicking. जब आप उसको press करते हो ना, that is called clicking, okay. Now clicking means to press and release the mouse button, लेफ्ट बटन अगेन एंड द राइट बटन, ओके. यानी जब आप उसको प्रेस करके रिलीज करते हो, दैट इज कॉल्ड क्लिकिंग. नाउ अ माउस कैन बी क्लिक इन टू डिफरेंट वेज, लेफ्ट क्लिक एंड द राइट क्लिक. आप दो तरीके से क्लिक करते हो, ठीक है. जब लेफ्ट बटन पे करते हो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक, एंड व्हेन यू क्लिक द राइट बटन दैट इज कॉल्ड राइट क्लिक, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, what is single click? Single click means to press and release the mouse button once, okay. So single click क्या होता है? Single click is used to select an object or document on the computer screen. जब उसको एक बार प्रेस करते हो ना लेफ्ट बटन को, that is called single click. And what is double click? When you press the left click button twice, यानी दो बार जब आप करते हो, that is called double click, okay. Now the small moving arrow on the screen of the monitor is called the mouse pointer or cursor. जो आपको स्मॉल एरो दिखता है ना स्क्रीन पे, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर, माउस पॉइंटर भी बोल सकते, ओके. एंड कर्सर. क्लियर? ये सब उसी के नाम है. नाउ देखो, जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव कर रहे हैं वैसे ही हमारा पॉइंटर भी मूव हो रहा है, ओके. क्लियर? सो
जहाँ पर भी आपको मूव करना है, जैसे जिस डायरेक्शन में माउस को मूव करेंगे वो भी मूव होगा। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ डगलस एंजलबर्ट। इन्होंने ही द कंप्यूटर माउस जो इन्वेंट किया था। ओके, ये एक साइंटिस्ट थे। क्लियर? सो आई होप क्लास 2 आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, so class 2, let us understand more about mouse. Okay, so the first thing you all have to remember that mouse is an input device. I hope it is clear. क्या है पहली चीज? बताओ जल्दी से। Mouse is an input device. Okay, what is mean of input? यानी जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, that is called with the help of mouse. So input, that is why it is called input device. Now the next is this is mouse pointer. ये क्या है? Mouse pointer. To point and select object on our monitor. Now see, as you can see on the screen, माउस को मूव कर रहे हैं, तो माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारा पॉइंटर भी वहीं पे मूव करेगा। ओके, नाउ रोलर माउस पहले जो थे वो रोलर माउस होते थे, बट नाउ ऑप्टिकल माउस, इट मींस रोलर वो बॉल नहीं लगी हुई होती है, अभी लेजर वाले ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर? This device is called an now the optical next mouse. thing is mouse pad. ओके, माउस पैड आपको पहले से पता है, वी केप्ट माउस और माउस पैड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द माउस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ओके, एंड ऑल्सो वर्क जेंटली. नाउ हाउ टू होल्ड अ माउस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से बताती हूँ. इंडेक्स फिंगर, ठीक है, वो हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट बटन पे. मिडिल फिंगर राइट बटन पे, और जो सेंटर में होता है वो हमारा स्क्रॉल व्हील होता है. जब भी हमको स्क्रॉल व्हील का यूज करना होता है, हम मिडिल फिंगर को पोजीशन को चेंज कर देते हैं. ओके, क्लियर? Move the mouse on the mouse pad and look at the movement of the pointer on the screen. See, again, whenever you want to move or select something, we can also move our mouse. Now this is called scroll wheel. Mouse action. Okay, now there mouse are 5 action. mouse actions. So there are basically 5 type of mouse double action. click, Left click, right click, double click, drag and right drop, click, drag and drop, scrolling. and scrolling. Okay, left click now the or first click. is left Gently click or press click. the left mouse click or button click once दोनों and same release होते it. हैं. Okay, The so mouse when we makes a press the click left sound. button, This that is is called known as left clicking. click or click. A ठीक है, single सिंपली left क्लिक भी click, बोल simply सकते हो आप called उसको. click, देखो, is generally लेफ्ट बटन used पे to क्लिक select किया an item तो आपको on the जो भी screen. फोल्डर या फाइल ओपन Left करना है click वो is also ओपन हो used जाएगा. to position the text अगेन वन cursor मोर थिंग, आपको somewhere जहाँ between पर the text कर्सर की to make a पोजीशन सेट correction. करनी है, जैसे ए के Double आगे, click. तो आप उसको कर सकते हो. Gently press डबल the क्लिक, left mouse जब हम button लेफ्ट twice बटन को at a व्हेन वी short क्लिक द interval लेफ्ट and बटन release it. ट्वाइस, 2 बार It is करते हो, called दैट इज double कॉल्ड click. डबल क्लिक. ओके, Double click is ट्वाइस यानी generally 2 टाइम्स used करते to हो, open दैट a इज कॉल्ड window or डबल a program. क्लिक. सी ऑन द स्क्रीन, Double click देखो opens a डबल selected बार प्रेस item. किया हमने उसको. We first Now a point to set an of item option. by moving Set the of mouse options over में it हम उसके and then प्रोग्राम्स और double click उसको over ओपन there. कर सकते हैं डबल क्लिक में. Right click. ओके, और सेम Press सेट ऑफ and release ऑप्शन the हम right mouse राइट button. बटन के क्लिक पे भी This is ओपन called कर right सकते हैं, click. बट देयर इज अ डिफरेंस. Right clicking उन दोनों shows में a list of डिफरेंस होता है. commands ओके, or a उसमें जो pop-up इतने भी menu on प्रोग्राम्स the monitor. कंटेंट्स होते हैं वो ओपन नहीं होते Drag हैं. and drop. नाउ ड्रैग एंड Drag and drop नाउ is व्हाट इज used to ड्रैग move एंड or ड्रॉप? copy an item from बताओ. one place to ड्रैग another on करना, the screen ड्रैग using the एंड mouse. ड्रॉप. सो ड्रैग जब हम Move the करते pointer हैं over लाइक an दिस, item देखो on the हमने screen. सेलेक्ट किया, उसको प्रेस करके Press the रखना है, left यानी button उसको होल्ड and करके hold. रखना है. ओके, Holding ड्रैग this एंड button, ड्रॉप. अब move ड्रॉप or मीन्स drag the pointer वट to एवर the द place डिजायर्ड where लोकेशन. you want to जैसे place मुझे the यहाँ item. पर चाहिए तो मैंने Release the वहाँ button. यहाँ से उसको ड्रैग किया और Observe, वहाँ पर the लाके item ड्रॉप appears कर on दिया, the new यानी place. रिलीज कर दिया. ठीक If है, you पहले repeat the प्रेस same करके रखा, while pressing the फिर उसको control key, रिलीज कर a दिया. copy सो of the दैट इज item will कॉल्ड be ड्रैग created. एंड ड्रॉप. आई होप it is So clear. class 2, I hope you all understand. Now come on page number 56. Okay, page number 56, the question is think and answer. So you have to choose the correct word to fill in the blanks. Now the first is clicking the left button of a mouse is called click. Okay. Number 2, selecting an item on the monitor means highlighting. Okay, किसी को select करते हो तो background blue हो जाता है, that is called highlighting. Okay, that thing we will discuss in our live class. Okay, now come on the page number 57, exercise time. Okay, now first you have to write down the date 21.1/2022 CW and mention day Friday. Now here the first question is tick write the correct option. Okay, so number 1, we click the right button dash to open a set of options. Okay, set of options के लिए the correct answer is once. Okay,
See, so this is set of options. So with the help of right button, okay, wants to open a set of options. Okay, जब आप उसको एक बार क्लिक करते हो right button को only for one time, then set of options are open. Clear? Now clicking the left mouse button once is called, again clicking the left mouse button once is called left click. Very easy. Okay, so when we press the left button, that is called left click, and when we press the right button, that is called right click. Now number 3 is moving an object to a new location using a mouse is called dragging. ओके, मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू लोकेशन, जब हम किसी को मूव करते हैं ओके विद द हेल्प ऑफ माउस, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग. मूविंग यानी आप उसको प्रेस करके रखते हो, देन आप उसको मूव करते हो लाइक दिस, होल्ड करके रखा, देन यू मूव. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग. क्लियर? नाउ नंबर 4 इज pressing and releasing a mouse button is called clicking. Okay, see, pressing, okay, then releasing, this is called clicking. Okay, now B, write true T for a correct statement and false F for an incorrect statement. Okay, so the first is we can select an item using a mouse. Yes, true. A mouse pad is used to cover a mouse. False. Because basically a mouse pad is used to protect our mouse and keep it away from dirt and dust. Okay, now we can drag and drop an item on the screen using a mouse. True, अभी बताया था drag and drop करते हो with the help of mouse. Yes, so number 3 true. Number 4, selecting an item refers to highlighting an item on the screen. Yes, जब आप किसी को select करते हो with the help of mouse, so background में ऐसा होता है blue, so that is called highlighting. True. Now see, fill in the blanks. Dash mouse has 2 buttons and a scroll in the middle. Scroll mouse. Okay, so the correct answer is scroll. SCROLL. Number 2, dash mouse is generally found on a laptop. Touchpad. TOUCHPAD. Number 3, we double click on a selected document to dash it, open it. Open करने के लिए करते हो OPEN. Number 4, releasing the mouse button after dragging is called dropping. Okay, क्या बोलते हो उसको? ड्रॉपिंग. रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग कॉल्ड ड्रॉपिंग. सो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आर डिफरेंट टर्म्स. ओके, ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग अलग अलग है. ड्रैगिंग मीन्स उसको मूव करना. ओके, ठीक है, एंड ड्रॉपिंग मीन्स जो आपकी रिक्वायर्ड लोकेशन है वहां पर आके उसको रिलीज कर देना. दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग. ड्रॉप करते हैं कभी हम किसी को, ड्रॉप करना यानी उसको वहां पर ले जाकर लीव कर देना, यानी रिलीज कर देना, छोड़ देना. Okay, clear? Now D, number the steps in correct order. Okay, अभी हमको इसको पढ़ना और steps को correct order में लिखना है. So basically the first is select a file by clicking the left mouse button. सबसे पहले इसमें से क्या correct होगा? हम सबसे पहले किसी भी फाइल को select करने के लिए select a file by clicking the left mouse button. Okay, left mouse button. Okay, now number 2 is hold the left button pressed. hold यानी उसको hold करके प्रेस करके रखना and move the mouse. The selected file will also move. This is called drag. ऐसे ही होता है, hold करके रखोगे लेफ्ट बटन को यानी उसको प्रेस करके रखोगे and move the mouse. Now the selected file will also move. जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो भी मूव होगी. This is called drag. Now last is रिलीज द माउस बटन. अब जो भी हमारी डिजायर्ड लोकेशन है वहां पे हम इस माउस बटन को रिलीज कर देंगे, यानी उसको आपको छोड़ देना है. द फाइल विल स्टे इन द न्यू प्लेस. जो भी अब हमारी न्यू प्लेस होगी फाइल वहां पर रहेगी. दिस एक्शन ऑफ द माउस इज कॉल्ड ड्रॉप. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी था. नाउ टर्न योर पेज नंबर 58. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रोलर बॉल माउस? सो to move the cursor on the screen. Clear? What is the use of rollerball mouse? To move the cursor on the screen. ठीक है, इसमें किसकी हेल्प से करता है cursor move? With the help of rollerball. Clear? Now number 2 is name the parts of a mouse. So the first is right button, number 2 is
Sorry, the first is left button, number 2 is right button, number 3 scroll wheel, and the last is tail like wire. Okay, clear? And again, apply your knowledge. What will happen if we double click on the right button of a mouse? That question we will discuss in our live class. So thank you class 2.